गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन की। इससे पहले क्लास में हमने जाना फंक्शन क्या है। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो आइए इस कड़ी में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ फंक्शन में है वह है वन वन फंक्शन। तो यहाँ पे वन वन फंक्शन यानी वन वन और इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है और मेनी वन फंक्शन किसे कहेंगे। वन वन फंक्शन क्या है और मेनी वन फंक्शन क्या है, आज इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसका दूसरा टाइप देखेंगे। तो पहले हम लोग आइए वन वन और मेनी वन फंक्शन को जानते हैं। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इसका डेफिनेशन, ए फंक्शन f such that x to y is defined to be one one or injective if the image of distinct elements of x have distinct image in y under the function f. That is, for every x1 x2 belongs to x, fx1 equal to fx2. This implies x1 equal to x2. That is, fx1 equal to fx2. This implies x1 equal to x2. This says that if two sets, this is set A or B, that is here written as x and y, if each element of x, if A, B, C, D and P, Q, R, S, suppose A is mapping here S, B is P, C is R and it is Q. Under the fx equal to y. This is the function. Each member of x has image in y. As for here, fa equal to s, fd equal to p. This implies if fa equal to fb, fa equal to fb, this implies s equal to p. If fa is equal to fb, therefore here s is equal to p. If fa not equal to fb, this implies s not equal to p. So each element of x has distinct image in y. For that, again, a function f x to y is defined to be 1 1 if the image of distinct elements of x, here noted, the image of distinct element of x have distinct image in y. Distinct image in y. This is known as the one one function. Otherwise, it is said to be many one function. This is the condition. If fx1 is equal to fx2, this implies x1 is equal to x2. We say that the function is 1 1. Otherwise, it is many one. अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हमारा होगा ऑन टू, यानी ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ऑन टू पे बात करते हैं। आइए देखते हैं ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको देखते हैं। ए फंक्शन f such that x to y is said to be onto or surjective. The second name is surjective if every element of y
is the image of some element of x under the function f. It means this is x and this set is y under the function f. Suppose 1 2 3 a b c. Here 1 is a, 2 is c, 3 is b. So each element of y has image in x. 1 is related to a, b is 3 and 3 is b. So each element of y has image in x under the function, under the rule f. That is, for every y belongs to y, there exists an element x in x such that fx is equal to y. This is the condition. If fx is equal to y under the function f, this is the set x and y. Each element in y has image in x. So fx equal to y is the condition that the function may be onto. Now the other types of function is 1 1 and onto. This is known as bijective 1 1 and onto function. तो आइए बात करते हैं 1 1 और onto फंक्शन. अगर ये fx is equal to y नहीं हो तो वह into फंक्शन कहलाते हैं. यानी अगर हम इस सब को एक इमेज में देखेंगे और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 1 1 और onto जिसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं वह क्या है. आइए 1 1 और onto फंक्शन के बारे में. 1 1 and onto, it is also known as bijective function. A function f such that x to y is said to be 1 1 and onto or bijective if f is both 1 1 and onto. यानी ऐसा फंक्शन जिसमें 1 1 भी हो और वह onto भी हो, ऐसा फंक्शन कहलाता है 1 1 और onto. आइए इस तीनों को एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं. ये मेरा कोई सेट x है और ये मेरा y है. सपोज कीजिए 1 2 3 इसके एलिमेंट हो और सपोज कीजिए a b c और d. यदि 1 a पर मैप करे, 2 b पर मैप करे और c 3 पर मैप करे, इस तरह से जो ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये ईच एलिमेंट जो x का है वो y से जुड़ा हुआ है. यानी y एलिमेंट जो है, y का जो एलिमेंट है वह प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग इमेज हमें मिल रहा है. तो ऐसा फंक्शन कहलाता है 1 1 फंक्शन. अब देखिए 1 1 फंक्शन कब होता है? जब प्रत्येक का एक अलग इमेज मिले हमें. यानी कंडीशन याद रखना है क्या कि fx1 is equal to fx2. This implies x1 is equal to x2. 1 1 दिखाने के लिए आपको ये कंडीशन दिखाना होगा. अब दूसरे केस में देखते हैं कि यह इनटू और ऑनटू क्या होगा. इस जगह पे देखिए, इसी केस में यहाँ पे d एलिमेंट बच रहा है जिसका की इमेज हमें x में नहीं मिल रहा है. इसका मतलब है कि fx इक्वल टू y यहाँ नहीं आ रहा है. तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? इनटू फंक्शन. क्योंकि अगर प्रत्येक का मिल जाता, इफ ईच एलिमेंट ऑफ y has image, then it is called onto. But here we see that the element d has no image in x, so it
is not a function of onto. If D has any image, we find D as any image in X, so it is also known as onto. If a function 1 1 or onto both, then it is called 1 1 onto function or bijective function. So here we see that this function is 1 1 but not onto. Again, suppose here two sets X and Y, and function 1 minus 1 1 2 minus 2 1 1 4 4. fx1 is not equal to fx2, but here the condition fx1 is equal to 1, fx2 equal to 1, but minus 1 not equal to 1. So the condition 1 1 is not satisfied here. This in types of function is known as many one function. Why? Because the minus 1 and 1 not equal, but f minus 1 is 1 and f1 is also 1. So the condition is not fulfilled here. This function is known as many one, but each element of y has image in X. So this function is onto function, because we see here each element of y has image in X. So this function is onto function but not 1 1 function. And here we see that this function is 1 1 but not onto. Now we draft some example for here and we solve it. The function is 1 1 onto or 1 1 into. इस तरह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम 1 1 into 1 1 onto पर दिए जाएंगे और फिर उसको आप सॉल्व करना होगा. तो आइए अब हम जानते हैं कंपोजिशन क्या है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं. यह कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन जो होता है वह देखिए, दो हम फंक्शन लेंगे, दो फंक्शन होगा तो मेरा 3 कोई सेट होंगे. सपोज कीजिए कि मेरा 3 सेट हो, एक फंक्शन ए से बी एक्स से वाई पर हो या ए से बी पर हो. यहाँ पे हमें 3 सेट लेना पड़ेगा एक्स वाई जेड. एक फंक्शन एक्स से वाई पर होगा, दूसरा वाई से जेड पर होगा. तो एक्स और जेड का जो रिलेशन होगा वह कहलाएगा कंपोजिशन. तो आइए हम लोग चर्चा करेंगे कंपोजिशन फंक्शन का. देखते हैं कंपोजिशन फंक्शन ऑफ फंक्शन. इसमें हम लोग देखते हैं कि लेट f is function defined on a to b and g is another function defined on b to c. Suppose here f is function a b, f is function from a to b and g is another function b to c. Be any two function was here f a to b and the g b to c, another function. Then the composition of f and g denoted by GOF. Then the composition of f and g is denoted by GOF. That means if this is the x here and this is the fx function, then this element is known as g of fx.
denoted by GOF. This is denoted by GOF. This means this is denoted by GOF. A to C. GOF is defined as the function GOF such that A to C. This means the A to C given by G of x is equal to G of fx for all x belongs to A. Here the element is x in A. For all element in A, the rule f, this is the fx, and the B to C, the function is G. So this is the G of fx. So the relation Gx to C is known as GOF. This is the composition of function. यानी यदि हम दो फंक्शन ले, एक फंक्शन जो A से B पर डिफाइंड हो और दूसरा कोई फंक्शन जो B से C पर डिफाइंड हो, तो A से जो रिलेशन हम C के साथ बनाते हैं, यानी A का जो मैपिंग C के साथ होगा वह क्या कहलाएगा? GOF, यानी G ऑफ fx. अब इसमें दो तीन बातें ध्यान योग्य हैं जिसमें आपको रिमाइंडर करना होगा. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग लिख लीजिए इफ f, अगर कोई फंक्शन है इफ f a टू b है एंड g b टू c, यहां जो हम देख रहे हैं, और 1 अगर ये दोनों 1 हो, यानी a टू b भी 1 हो और b टू c भी 1 हो, तो GOF जो a से c पर डिफाइंड हमने किया है वह ऑल्सो 1 होगा. तो आप रिमेम्बर कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए. मैं फिर से बता दूं, यदि a से b जो फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन जो b से c पर है g है, दोनों के दोनों 1 हो, इफ a फंक्शन f a to b and function g b to c are 1, then GOF a to c is also 1. पहली बात. दूसरी बात आप इसे भी नोट कर लें कि यदि इफ f जो फंक्शन है a से b और जो दूसरा फंक्शन है g b to c आर ऑन टू, यदि दोनों के दोनों ऑन टू हो तो GOF जो होगा वह ऑन टू होगा. लेकिन इसका कन्वर्स, इसको अगर उल्टाए तो यह पॉसिबल नहीं है. यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी इसका कन्वर्स जो होगा वह पॉसिबल नहीं होगा. इस तरह से यदि हम लोग फंक्शन देखें कि यदि f कोई फंक्शन है a से b पर और g कोई फंक्शन है b से c पर, गिवन फंक्शन है such that GOF is 1, then f is 1. लेकिन अगर GOF 1 है तो f 1 होगा. इस बात को भी आप लोग नोट कर ले. फिर इसी तरह से यदि f कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कि a से b पर है और कोई g फंक्शन है जो कि b से c पर है, गिवन फंक्शन सच दैट, अगर हम लोग ऐसा कहें कि GOF जो होगा वह ऑन टू होगा, इसका मतलब g जो है वह ऑन टू होगा. ये बात आप याद कर लीजिए. अब एक बच गया है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं, वह है इन्वर्टेबल फंक्शन. इन्वर्टेबल फंक्शन, यदि कोई फंक्शन f x से y यानी a से b पर हो तो इन्वर्टेबल फंक्शन तब होगा जब दूसरा कोई फंक्शन g y से x पर आएगा. यदि GOF, यहाँ पे GOF यदि i अगर आ जाए ix, यानी ये मेरा GOF यदि ix आ जाए तो ऐसे फंक्शन कहलाएंगे उसके आइडेंटिटी. और FOG, दो बातें होंगी GOF और FOG. यदि GOF इक्वल टू ix आ जाए और FOG इक्वल टू iy आ जाए तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग कहेंगे इनवर्स ऑफ f. यानी g जो कहलाएगा वह f का इनवर्स कहलाएगा और f जो होगा वह g का इनवर्स कहलाएगा. और इस तरह से हम उसे f इनवर्स लिखते हैं. तो आप आज आपने इनवर्स के बारे में भी जाना, वहां भी हम यही लिखाएंगे कि GOF x जो होगा वो ix होना चाहिए और फिर FOG जो होगा वह iy होना चाहिए. इस तरह से f जो होगा तो g का इनवर्स कहलाएगा. इसको हम लोग f इनवर्स इस तरह से लिखते हैं. तो आज हमने फंक्शन के सभी टाइप को जाना. नेक्स्ट क्लास में हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे. आप मेरा चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब ना भूलें ताकि मैं आपको अगर नया वीडियो डालता हूं तो आपको जो है वह मैसेज मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.